हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैं आरआरबी पीओ का मेंस का मॉक टेस्ट करने जा रही हूँ और ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट नंबर 14 है, ठीक है। और बाकी 13 मॉक टेस्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 के मैंने पहले ही कर लिए थे और इन लास्ट के 8 मॉक टेस्ट का स्कोर मैंने शेयर किया था एक वीडियो में, और बाकी इंडिविजुअल 9 से अभी तक 13 तक शेयर किया है। और अभी मैं 14 नंबर मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं इंग्लिश, करंट अफेयर और कंप्यूटर को एक पार्ट में और बाकी रीजनिंग और क्वांट दूसरे पार्ट में कर लेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी टाइम ज़्यादा इंग्लिश में नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि इसकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैं टाइम लगा देती हूँ, जिससे क्वांट और रीजनिंग के लिए कम टाइम बचता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं जनरल अवेयरनेस। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक based in dash। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कोयम्बटूर। तमिलनाडु मर्केंटाइल में थुथुकुडी में है, आई थिंक। सारी तो तमिलनाडु के लिए। डिंडीगुल नहीं होगा, ठीक है। तिरुनेलवेली भी नहीं होगा, त्रिचुरापल्ली भी नहीं होगा। कोयम्बटूर बेस्ड, नो, थुथुकुडी होगा। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड इन डैश signed an MOU with the incubation enterprise support center of IIM Shillong। So IIM Shillong और गुवाहाटी, यस, IIM Shillong और गुवाहाटी बेस्ड है, राइट। ये असम से है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इशू कॉमर्शियल पेपर? ओके, कॉर्पोरेट्स भी कर सकते हैं और इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कर सकते हैं, स्टैंड अलोन, प्राइमरी डीलर्स, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। और कॉर्पोरेट्स भी कर सकते हैं, स्टैंड अलोन, प्राइमरी डीलर्स भी कर सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल पेपर कौन जारी नहीं करता है? आई थिंक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स होगा इसका आंसर। GE Stream Power signed $165 million pact with which country, with company for the supply of 3 nuclear steam turbines out of 6 units for NPCIL's domestic nuclear program। GE Stream Power with, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। भारत हैवी मूवर्स लिमिटेड भी नहीं होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मुझे लग रहा है यहाँ पे होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द डिजिटल पोर्टल कॉल्ड परीक्षा संगम? ये CBSE है, ये मैंने आज ही करंट अफेयर में पढ़ा है। रशिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर इन जुलाई, विच कंट्री वाज द टॉप सप्लायर? सो यहाँ पे ये मेरे को क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है। एवरी ईयर वर्ल्ड डैश कैंसर डे is observed on 1st of August। स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर। आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर होगा यहाँ पे आंसर। Which bank signed an agreement with Kerala's Forest and Wildlife Department to enable digital collection of payment in ecotourism center? South Indian Bank। Banking Codes and Standards Board of India। Banking Codes and Standards Board of India headquartered in Mumbai। An instrument of qualitative credit control in India is open market operation, credit rating। यहाँ पे कह रहा है क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं कह रहा है, क्वालिटेटिव। बैंक रेट पॉलिसी, सो बैंक रेट, ठीक है, और रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रेशनिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो यहाँ पे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कौन सा है? रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, क्रेडिट रेशनिंग, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। एज पर RBI's annual report, the size of RBI's balance sheet increased by dash in 21-22। सो यहाँ पे आई थिंक 6.68 हुआ। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं। RBI की जो बैलेंस शीट है वो इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर रही हूँ। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन फॉर नीलांचल स्पार्क निगम लिमिटेड इज कंप्लीटेड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ 93.71% शेयर्स टू, तो यहाँ पे होगा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। ये आज ही पढ़ा था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान? कैमल होगा, टाइगर, काउ, लायन तो कहीं का नहीं होगा। RBI has the right to issue banknote under which of the following sections? Right to issue banknote, और ये मैंने पढ़ा था बट मैं फिर से भूल गई, मैं हर बार भूल जाती हूँ ये क्वेश्चन।
सेक्शन 22 होगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। टिक कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। द मेन एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज टू encourage exports, to reduce imports, to favor the debtors at the expense of the creditor. No idea इसके बारे में. So in 2018, which bank announced a joint venture with Zio for launching payments bank operations and recently renewed its partnership? Launching payments bank. With Jio for launching payment banks operation. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसमें जियो में जो है वो शेयर है, और बाकी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, यही लग रहा है मुझे आंसर। पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज्ड द 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ 21,000 करोड़ अंडर विच स्कीम? संपदा योजना, फसल बीमा योजना, किसान स्कीम। प्रधानमंत्री, ये एमएसएमई से रिलेटेड है और मुझे यही लग रहा है यहाँ पे 21,000 करोड़। किसान योजना 21,000 करोड़ किसके? किसान संपदा योजना, फसल बीमा, आई थिंक यही होना चाहिए, देखते हैं। The UNG approved which country to replace Russia in United Nations Human Rights Council? Replace Russia। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना was recently news in which state? बीजू स्वास्थ्य कल्याण, ये उड़ीसा की है। A deep mind owned by dash developed AlphaFold, no idea. First payment bank of India to integrate with UPI. First payments bank in India to integrate with UPI is Paytm Payments Bank, India Post Payment Bank, Fino Bank। Airtel Payment Bank होगा, Paytm Payments Bank। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ और इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। The Bison National Park is situated in Bison, I think त्रिपुरा का है शायद। Bison मुझे त्रिपुरा का लग रहा है। The Bison National Park is Bison त्रिपुरा का है, हिमाचल प्रदेश का तो नहीं है। Bison National Park, इसको स्किप कर देते हैं। Name the first Asian country to join North Atlantic Treaty Organization Cooperative Cyber Defense Center of Excellence। ओके, मलेशिया, साउथ कोरिया, आई थिंक साउथ कोरिया आंसर होगा, जिसने नाटो के कोऑपरेटिव डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया। जापान, सिंगापुर, कनाडा। वेयर वाज फर्स्ट वाटर एटीएम लोकेटेड इन हैदराबाद? Which of the following sections of RBI 2034 allows the RBI to form rules regarding the exchange of damaged and perfect notes? ये भी मैंने पढ़ा था, अभी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ तो इसको मैं स्किप ही कर देती हूँ। Which bank signed MOU with IISc Bangalore, placing for rate 107.76 crore support for Ga+Ca+Eng अस्पताल के लिए, लाइट हॉस्पिटल being? Which bank signed an MOU with IISc Bangalore, placed rate 107.76 crore support for the Ga+Ca+Eng hospital being set up at the IISc campus? No idea about this question. Padma Shri awardee Shiv Kumar Sharma passed away. He's associated with musical instrument, tabla, mandolin, संतूर, सरोद। शिव कुमार शर्मा तबला से होंगे या फिर संतूर, इसमें मैं कंफ्यूज हो गई क्वेश्चन में। Dash is the partnership relationship between a bank and insurance, bank assurance. Name the bank which is not regulated by RBI, ICICI Bank, IBPSpo Bank, State Bank of Sikkim में हो जाएगा। The RRB scheme is launched with an outlay of rate 6,000 crore. Who was re-elected Prime Minister of Hungary for the 4th time in a row? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बन, ये तो कहीं के नहीं है। कैटालिन नोवाक हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, राइट? एक मिनट, कैटालिन नोवाक 4th टाइम इन अ रो। पीटर ये भी नहीं होंगे, गॉर्डन नहीं होंगे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कैटालिन नोवाक होंगी मुझे लग रहा है, या विक्टर ऑर्बन। आई एम कंफ्यूज्ड इन बोथ। हंगरी की 4th टाइम फीमेल प्राइम मिनिस्टर होती तो फर्स्ट बनी होती, राइट? तो हंगरी की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है क्या ये? कैटालिन नोवाक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो विक्टर ऑर्बन होगा। तनुजा निशारी डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा,
ये क्या लिखा हुआ है, आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय विच कंट्रीज पार्लियामेंट, यूके. Following organization works to foster global growth and economic stability by policy advising and developing relations to them. International Monetary Fund होगा इसका आंसर. The book The McMahon Line, A Century of Discord, is authored by General Joginder Jaswant Singh, the former governor of which state? I think अरुणाचल प्रदेश हुआ इसका आंसर. एक सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश हो या पंजाब. जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह पंजाब के फॉर्मर गवर्नर होंगे. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड अमेंडमेंट टू द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स वर नोटिफाइड इन विच ईयर? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आई थिंक 2006 होगा इसका आंसर. Which Indian naval ship participated in maritime partnership conducted between India and France? INS Tabar. Maritime partnership exercise. Kadmat, Deepak, Tarkash, Sindhuveer. INS Sindhuveer होना चाहिए इसका आंसर. यूको बैंक हेडक्वार्टर है कोलकाता. Armand Duplantis was in news recently, and he is related to which sport, right? So pole vault, javelin throw, golf, swimming, 400-meter hurdle. Armand Duplantis 400 meters I think hurdle होगा. Swimming इसको skip कर देते हैं. Name the first urban cooperative bank to participate in SBI's vision of empowering MSME. Maso Merchant, Shamrao Vittal. यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? नो आइडिया, इसको मैं स्किप कर रही हूँ. Who became the first women, second Indian to feature in the Wall of Fame? First women and second Indian, अंशुला कांत, गीता गोपीनाथ. ठीक है, तो करंट अफेयर में मैंने 27 क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, इसको मैंने स्किप किया है. आई थिंक एयरटेल पेमेंट बैंक होगा, यहाँ पे मैं ये टिक कर देती हूँ. बाकी देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं. कंप्यूटर करते हैं. इन इनपुट आउटपुट पोर्ट एन IO पोर्ट यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ 4 डिफरेंट रजिस्टर्स, व्हिच वन अमंग देम इज नॉट? कंट्रोल रजिस्टर, स्टेटस, डाटा इन, डाटा आउट, कमांड. ये मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे याद नहीं है. कैप्चा में टी क्या है? ट्यूरिंग. MS एक्सेल में अंडू एंड एक्शन कैन बी इन शॉर्टकट ऑफ. एक अंडू होता है, एक रीडू होता है. ठीक है, यहाँ पे वाई दिया नहीं, कंफर्म होगा जेडी होगा. फिर EDSAC एक प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था, यानी EDSAC वाज एन अर्ली ब्रिटिश कंप्यूटर. एस क्या है? सिस्टम, देखो सर्विस नहीं होगा. ठीक है, सर्विस. दो ऑप्शन सेम लिए हुए हैं. स्टोरेज सिस्टम. इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल. The EDSAC was an early British computer. In EDSAC is stands for, मुझे इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, मैं इसको स्किप कर रही हूँ अभी. The UNIVAC and EDSAC computers belong to which of the following generation? I think ये भी मेरे को याद नहीं है अभी. In Mac OS screen, which among the following is a button on the screen that convenient place to keep the apps and document used frequently? Toolbar, ribbon, menu bar. In Mac OS screen, menu bar हो जाएगा. BCD stands for binary coded decimal, and it is number system where 8 bits I think होता है BCD में. May refer to an indicator used to show the current position for interaction computer monitor on the display device. Cursor may refer to an indicator, adapter, pointer, blinker, cursor. ERP stands for Enterprise Resource Planning. Enterprise Registry नहीं होगा. Enterprise Renew Planning, Retention, Retirement. Every computer and network device is connected to a single cable is bus topology. And dash is the piece of hardware that lets a device read and interact with a disk. Piece of hardware and lets a device read and interact with a disk. USB flash drive, optical disk drive. डिस्क सब पढ़ने और इंटरैक्ट करने के लिए करते हैं.
ऑप्टिकल डिस्क्राइब, यहाँ पे एन लिखा है, इससे मुझे आइडिया लग रहा है तो बी होगा या फिर डी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कभी कभी ये चीज फॉलो होती है। सो एन ऑप्टिकल डिस्क्राइब द पीस ऑफ हार्डवेयर, आई थिंक यूएसबी फ्लैश ड्राइव होगा, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेशन टूल्स? विनजिप, WinARR, WinZip, pzip, which is not an example of, I think Google Desktop, ये वाला डिफरेंट लग रहा है। Which among the following term means refer to web address of a page? URL. Are set of rules and procedures to control the data transmission over the internet. IP address. Set of rules and तो protocols होता है। The maximum amount of data transmitted over an internet connection is in an amount of time is called bandwidth. The text files with small pieces of data which are used to identify your computer use a computer network. Identify your net. लिखा है the text files with small pieces of data which are used to identify your computer as you use a computer network. Downloads नहीं होगा, ठीक है। Cookies हो सकता है, which are used to identify your computer as, okay, cookies मुझे यहाँ पे लग रहा है। Dash is done to maintain and check the quality of application software or released or updated. Running यहाँ पे testing is done to maintain, right? Maintain and check the quality of application. Debugging, running, testing. यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं, इसको मैं छोड़ देती हूँ क्वेश्चन को। A dash is used to extract data from the database in a readable format according to the user's inner request. Extract data, query view, query trash, query in readable format. Which of the following is a component of ACID model in database management? So atomicity, consistency, isolation, इसमें सारे हो जाएंगे, फुल फॉर्म ही दी गई है इसकी। In dash memory allocation, once the memory is allocated, the memory size cannot change. Static, dynamic, access processing, micro. Static memory और एक होता है dynamic, तो static में change नहीं कर सकते हैं। A dash is a type of malware that spreads copies itself, ये होता है computer spread copies itself from computer to computer. Spyware, adware, ransomware, Trojan horse होता है नहीं, copies of itself, तो ये computer war। Dash kind of programming language is Java. जावा का यूज करते हैं 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कन्वेंशनल डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 6th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा का यूज उसमें एआई में करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और गेमिंग के लिए करते हैं, तो मुझे लग रहा है 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मूव अ फाइल? Using shortcut keys, using the cut and paste command, dragging and dropping with the mouse, तो फर्स्ट सेकंड तो होगा ही मूव करने के लिए फाइल। using cut shortcuts keys. Which among the following is used to organize data and perform financial analysis? तो ये होता है MS Excel ही होता है ना। The minimum zoom supported by PowerPoint is, देखो 5% तो 1% तो होता नहीं, तो ऑप्शन वैसे लिमिट होते हैं। 10% होता है मिनिमम और मैक्सिमम 200 नहीं होता, एलिमिनेट। 10% के साथ 400 हो जाएगा क्योंकि 100% नहीं होता है। Which of the following is not a type of Microsoft Access database object? Modules, worksheet, table. Not a type of Microsoft Access database. So tables होता है, worksheets होते हैं, micros और modules में क्या होता है? Micros नहीं होते हैं, I think. Modules, table, worksheet, modules, macros. Which among the following is known as operating system? Linux, operating, Unix, सभी तो हैं। The SDLC, इसमें फुल फॉर्म पूछ रहा है, SDLC में D क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म पता होगी तभी इसको कर सकते हो। इसका मुझे नहीं पता है। Booting refers to restarting system using restart button. Warm booting. रीस्टार्ट अगर कर रहे हो, ठीक है। बूटिंग रेफर्स टू रीस्टार्टिंग कंप्यूटर।
Restart systems using restart button is called war booting. In computer, an interpreter means a program that translates code. Which of the following operating system is one in which several computer systems connected through a single communication channel? Several computer system, real-time sharing, network OS, batch, time sharing, distributed, which is known as semiconductor memory. प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम भी प्राइमरी है, इसका मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड दोनों होगा सेमीकंडक्टर मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को तो नहीं कहते हैं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी रैम रोम भी प्राइमरी है, तो यहाँ ए बी दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर? इसके बारे में अभी मेरे को आइडिया नहीं. व्हाट इज द फुल फॉर्म? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. व्हाट इज LSI? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. Which among the following is the device is necessary for data transmission of wide area network is called hub, switch, modem. Wide area के लिए router, hub, switch, modem, router. इसमें तो confusion हो रही है. Resolving bugs in program is known as debugging. Which of the following converts all the source code into machine code, creating an executable file? Assembler, compiler, converts all the source code, right? So I think यहाँ पे compiler होगा. Twisted pair cable is used for router, computer networks, telephone networks. Which protocol is used to send, receive and relay outgoing emails between sender and receiver? SMTP. सो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस में कितने क्वेश्चंस किए हैं, तो काफ़ी टाइम मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है, 5 मिनट्स अराउंड, 5 नहीं 3 मिनट्स. तो यहाँ पे 31 किए. ओके, नाउ इंग्लिश करते हैं. ठीक है, इसके लिए मैं 35 मिनट अराउंड अलॉट कर रही हूँ. देखते हैं इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं. इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ, पहले तो पैसेज को भी मैं स्किप कर रही हूँ. बाकी देखते हैं क्या है. यहाँ पे है contemporaneous without changing its meaning to the word. When it's contemporaneous, ये क्या लिखा हुआ है? But data serves its purpose best. The data serves its purpose best when it's contemporaneous. Credence, synchronous. Bolstered means होता है किसी चीज में इंक्रीमेंट होना, राइट? bolstered. अपोजिट कह रहा है यहाँ पे, अंडरमाइन होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे. अपोजिट टू bolstered should also be bolstered by case studies. Depravity, crestfallen, desist, undermine, deposition. इसको भी स्किप कर देते हैं. चलो सबसे पहले कर लेते हैं एरर पार्ट, देखते हैं कितने क्वेश्चंस बनते हैं इसमें. 2 parts of the sentence there is an error. ठीक है, तो एरर फाइंड करना. A forward looking mindset centers on policy makers and society at large, fully recognizing supporting the central socio-economic role that MSMEs play in India. Micro, small and medium enterprises play in India as across the world. A forward-looking mindset centers on. तो यहाँ पे ए में कोई एरर मुझे नहीं लग रही है. ठीक है, CD में देखते हैं. डी में तो एरर लग रही है. MSMEs प्लेस होना चाहिए क्योंकि सिंगुलर MSME. fully recognizing and supporting the central socio-economic role. Society at large fully recognizing, supporting the central socio-economic role that MSMEs play in India. With the ongoing war against COVID-19, it is the exactly opposite, which need equal, if not greater attention. The state of preparedness within the fortress. The state of preparedness within the fortress. डी में मुझे कोई एरर नहीं लग रही है. ए में देखते हैं. विद द ऑनगोइंग वॉर अगेंस्ट कोविड-19. विद द ऑनगोइंग वॉर अगेंस्ट कोविड-19, यहाँ पे ए में एरर नहीं लग रही है. इट इज द एग्जैक्टली अपोजिट which needs
सी में यहाँ पे एरर है, ठीक है, और ए में एरर है नहीं। मुझे सी में एरर लग रही है, द स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस विद इन द फोर्ट्रेस, यहाँ पे डी में भी कोई एरर नहीं लग रही है। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट which need equal if not greater attention। मुझे यहाँ बीसी में एरर लग रही थी, ठीक है। और इन साउथ, ये पहला कौन सा क्वेश्चन टिक कर दिया है? In some South states will pre-embedded conditions of self-governing and nearly autonomous panchayats, they are becoming the beacons of hope by proactively engaging with citizens at the village level. In some South states with pre-embedded conditions of self-governing, ए में कोई एरर लग नहीं रही है, and nearly autonomous panchayats, they are becoming, यहाँ पे मुझे नो एरर लग रहा है। Though the task force has not openly declared community transmission, it is reassuring to note that the ICMR has already initiated। यहाँ पे सी में एरर है, ठीक है, इनिशिएट से जगह इनिशिएटेड होगा। तो अगर सी में एरर, डी में चेक करते हैं, रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्प्रेडिंग, बी में तो नहीं है। इट इज reassuring to note that the ICMR has already initiated, या ICMR has already initiated। मेरे को यहाँ पे बी में भी एरर लग रही है, क्योंकि has के पहले ऑलरेडी आना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी bolstered, यहाँ पे PGI report should also be bolstered by case studies, crestfallen, racist, undermine, deposition, off the hook, correct find करना है। The idiom phrases may not be correctly used, or identify that the idiom incorrectly either in grammatical or contextual mark। Okay, incorrect find करना है। So I would hate to see him get off the hook on criminal charges। We can't let him his high bandwidth companies off the hook for supporting broadband deployment, and her hypothesis really off the hook। We cannot let high bandwidth companies off the hook for supporting deck out, crank up। I think English यहाँ काफी टफ है, बट कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने की। Concern over freebies in Indian politics has recently been dashed by those in the highest offices in the country। Has recently been been showed by those Indian politics has recently been, perfect नहीं आएगा, diminished नहीं आएगा, altered by those in the highest offices in the country। Concern over, concern क्या किया जाता है, ठीक है, concern को express करेंगे, altered नहीं होगा, dismiss perfect नहीं होगा। concern has been expressed by those, has been showed by those, मुझे को express सही लग रहा है यहाँ पे। Speaking at the dash ceremony, unjust independence ceremony, inaugural ceremony, yes, freebies by claiming that these dash the electoral process। Days later, a bench headed by Chief Justice N. V. Ramana heard a public interest litigation in which the pensioner argued against the promise of irrational freebies by claiming that these dash the electoral process, leak, tenor, persist in case, distort। These dash the electoral process by claiming that these distort the election process। यही मुझे सही लग रहा है। It has been reported that during the hearing, the Chief Justice of India remarked that freebies were a serious issue and asked the central government to take a stand. Okay. The court also suggested that the Finance Commission could be involved to look into the matter and dash the solution. Envisioned, look into the matter and dash the solution. Propose the solution, conceal the solution नहीं होगा, repent नहीं होगा, resent नहीं होगा।
Court also suggested that the finance minister could be involved to look into the matter and envisioned solutions. To be involved to look into the matter and dash solutions. Propose solutions. Envision होना चाहिए. यहाँ पे fill in the blank को करना है, एक sentence को fit करना. Select the best out of the given. Scientists are making dramatic progress with techniques for gene splicing, modifying the genetic makeup of organisms. Dash it is an overlap that's helped fuel speculation the SARS-CoV-2 coronavirus. Inherent difficulties. It is an overlap. इसको बाद में करेंगे, पहले इसको और क्वेश्चंस करते हैं. The ICC called at an ongoing qualifier for next year's women's. Called at, ये called at नहीं होगा. Following the emergence of new COVID-19 variant, इसका मतलब है कि मतलब इस ODI वर्ल्ड कप को रद्द कर दिया गया, ठीक है. तो called off हो सकता है. The ICC called off an ongoing qualifier. The ICC called off the ongoing qualifier. तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट सही लग रहा है, ठीक है. और called out, called off हो जाएगा. On called off an ongoing qualifier. All learning is instinctive. Even Arjun could not learn all tricks of warfare from Guru Dronacharya. In spite of being his favorite disciple, despite being his favorite disciple या favorite student, instead being his favorite disciple. तो in spite of या फिर पहला और दूसरा हो सकता है क्योंकि despite और in spite of सेम ही है. The raising pandemic has wreaked damaging in. तो फर्स्ट नहीं आएगा, वो अब थर्ड आएगी, राइट. तो फर्स्ट एलिमिनेट करते हैं अगर, तो ऑप्शंस जाते हैं दो, बी और सी. या तो थर्ड होगा या सेकेंड होगा, एक चूज करना है. सो हैज रिग्ड हैवोक, हैज डैमेज्ड हैवोक. रिग्ड एंड डैमेज. द रेजिंग पैंडेमिक हैज डैमेज्ड हैवोक इन टॉलीवुड. रिग्ड होना चाहिए, मेरे को थर्ड यहाँ पे सही लग रहा है. फॉर फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन, फॉर है तो इसके साइन जाएगा. फॉर फैसिलिटी नहीं होगा, ठीक है. थर्ड एलिमिनेट हो गया. फॉर फैसिलिटेटिंग, फर्स्ट सेकंड हो सकते हैं. ट्रांजेक्शन डिमांड, फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शनल डिमांड ऑफ पब्लिक. फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन डिमांड ऑफ पब्लिक. तो थर्ड नहीं होगा, तो इस बी और डी ऑप्शन रिलेट हो जाता है. तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट सेकंड होगा. फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शनल डिमांड, ट्रांजेक्शन डिमांड for public, transaction demand for facilitating transactional demand of public. तो यहाँ पे सेकेंड सही लग रहा है. for facilitating transaction demand नहीं होता है, transactional demand for of public. I glanced at a notice. तो दोनों वर्ब सेकेंड आएंगे, तो जो दिया है वो तो रॉन्ग है. so I glanced in and noticed. I glanced up and noticed. I looked up and observed. तो सेकेंड थर्ड सही लग रहा है. लुक्ड अप, ग्लैंस्ड अप, ऑब्जर्व, नोटिस्ड. द हाई कमांड आर्बिट्रेटेड एंड डैश. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स व्हिच मे और मे नॉट फिट. चूज द वन दैट करेक्टली फिट. ओके. द हाई कमांड आर्बिट्रेटेड एंड डैश disputes judicially and fairly among congressmen without getting dash in factional quarrels. Staggered. So यहाँ पे मेरे को कैब नहीं आ रही है. The Nehru years dash a culture of consensus. Should never allow. Lack even the dash and the dash too. The detailed award is being dashed by India and Italy for dash of those portions. इसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं इस भी स्किप कर रही हूँ. अगर मैं पैसेज की बात करूँ तो इससे पहले देख लेते हैं और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है. यहाँ पे है unrelenting. The unrelenting nature of their crusade coupled with the fact that the Supreme Court has an anti-abortion supermajority for the first time. The unrelenting nature of their. So which can be replaced this word unrelenting
unwarranted, unwidely, unkept, unremitting, unflagging. बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हैं. apparent, no apparent concern, opposite. obscure हो जाएगा apparent का, obscure हो जाएगा opposite कह रहा है तो. These words are the synonym or antonym except one word. Okay. Bleak and hues, brittle and crisp. ठीक है. Bustle and commotion, batty and insane. Barren warrant, barrier custom, base conundrum. मुझे ये लग रहा अलग है. Barrier and custom, warrant and barren. तो यहाँ पे कोई भी फिट नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो बेस और कॉन्ड्रम मतलब पहली, और बेस का मतलब तो पहली नहीं होता ना. सो ये अलग है. ठीक है. कस्टम और बैरियर भी अलग लग रहा है. वॉरेंट एंड बैरन, तो मुझे यहाँ पे सारे लग रहे हैं कि गलत है. तो ब्रिटल एंड क्रिस्प यहाँ पे सही है, जो डज नॉट मेक द सेंस. ठीक है. तो ब्रिटल एंड क्रिस्प सही है. बस्टल, कमोशन और बाकी ऑप्शंस नहीं पता है. अनरिलेंटिंग, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम. unwisely, remitting, has become too cramped. Have to 3, you have to identify it, carry forward. Okay. So यहाँ पे अगर have लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आएगा. So initial seeds in this experiment, differences among the initial seeds might have become too cramped. तो have आ सकता है थर्ड में. Considering that the northern coast of Jeju Island was more populated, a tsunami of 0.15 meter height. a tsunami लिखा है तो इसके साथ have नहीं आएगा, राइट. सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अगर, तो हमारा सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, बी और सी. तो चलिए मान लेते हैं थर्ड होगा. ठीक है. पहले को चेक करते हैं. द लास्ट मंथ द कॉरिडोर्स इंश्योर the connection between line 4 and line 14 were widened and doubled as they have become too cramped. तो फर्स्ट ज्यादा यहाँ फिट बैठ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. Once the roads are assigned, sorry roads नहीं, once the roles are assigned, the regulator has to decide on the exact quantum composition of new capital requirement that assign that complement each student's strength and but more often are defined through the process of role differentiation. यहाँ पे फर्स्ट में रोल की बात कर रहे हैं, फिर रोल सेकंड तो होगा नहीं. यहाँ पे that complement each student's strength and interest and grow function more effectively. The regulator has to decide on what exactly. Once the role are assigned formally, but more often. Once the roles are assigned formally, but more often are defined through the process of role differentiation that complement each student's strength and interest, the group will function more effectively. Once the role are assigned that complement each student's strength and interest, the group will function more effectively. The regulator has to decide on the exact quantity and composition of new capital requirements. तो यहाँ पे सारे मुझे लग रहा सही होंगे, बाकी देखते हैं. We have established a framework which aims to strengthen the quality of service. ठीक है, ये भी हो सकता है. A framework to oversee, manage and mitigate, ये भी हो सकता है. Framework for patriating the asset to has, we bring the money back. यहाँ पे मुझे सारे सही लग रहे हैं. ठीक है, और देखते हैं आगे. According to the passage, what are the purposes of performance grading index? तो जो ये पैसेज है ज्यादा बड़ा तो नहीं है, तो इसको रीड कर लेते हैं. The performance grading index is Government of India's big effort of publish multi-directional tracker of outcomes and inputs in school education at the state level in 2017. However, since primary education are not priority attention when it centers welfare, it's hard to spot significant transformations. The PGI district report for 2019, 18, 19, 20 published. Both progress and action are given. 84 indicators were tracked, including data and utilization,
monitoring primary, secondary schooling, and this reporting and aggregation of grassroots at no district levels can tell us about the about the about the state of education. But the data is contemptuous, but data serves its purpose best when it's contemptuous, and the latest PGI report in from 2020. Much has changed. Subsequently, the pandemic disrupted the successive academic calendars. ओके तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द सोल पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स. ठीक है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का सोल पर्पस क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पर्पस है बिग एफर्ट्स टू publish multi-dimensional tracker of outcomes and inputs in school education. It helps in gauging at primary level education. In India, it publishes a multi-dimensional tracker of outcomes and inputs in education at the state level. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड तो पक्का आंसर होगा. ठीक है, तो लास्ट के दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और बी ऑप्शन, यानी या तो सेकेंड थर्ड होगा या फिर सेकेंड केवल होगा. ठीक है, थर्ड को चेक कर लेते हैं और सेकेंड तो होगा ही. द ग्रैनुलर लेवल डेटा बाय द PGI can help in telling us about the overall state of education in India. Overall. यहाँ लिखा है कि however since primary education has not received the high okay, यहाँ पे प्राइमरी लेवल नहीं होगा तो फर्स्ट तो होगा नहीं और सेकेंड सही है. थर्ड वाला चेक कर लेते हैं. Significant transformation in this report, outcomes, teaching access and both progress, यानी ये जो होता है help telling us about the overall state. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड हो जाएगा. According to which of the following statements the author would agree? The progress of education in India is mixed in nature. Okay, next welfare schemes in India receives less attention as compared to primary education. Teachers have difficulty in covering up the gap of years in having a pandemic. Okay, देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा. Teachers' professional outcomes can offer wealth and post-COVID-19 welfare schemes in India. यहाँ the pandemic disrupted 2 successive academy. यहाँ पे लिखा teachers have difficulty in covering up the gap of 2 years that students have come across due to COVID-19. Pandemic disrupted 2 successive academic calendars and recent reports also suggest teachers struggling to bridge learning deficit. ठीक है, तो थर्ड तो सही होगा 100%. वेलफेयर स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बात कही गई है. सो वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया रिसीव्स, देखते हैं यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स के बारे में कहाँ पे मेंशन है. तो थर्ड अगर होगा तो जरा ऑप्शन देखते हैं. तो या तो सेकेंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड. इसका मतलब है कि एक ऑप्शन चेक करना. प्रोग्रेस एजुकेशन मिक्स्ड इन नेचर, इंक्लूड सर्वे एंड फ्रॉम डिटेल ऑफ यूटिलाइजेशन, district providing data, grassroots granular data, change disrupted, district levels and progressing regression district. Okay, centers यहाँ पे लिखा हुआ है priority attention many centers welfare schemes have. लिखा हुआ है यहाँ पे कि however since primary school has not received the high priority attention many center and state welfare schemes have. So it's hard to spot significant transformation. यानी welfare scheme in India receive less attention, have not received the high priority attention many center state schemes have. यानी जो center state की welfare schemes हैं, since primary education has not received the high priority attention many states and centers welfare scheme have. तो यहाँ पे second हमारा wrong है. ठीक है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, तो second अगर wrong है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वही आंसर होगा. अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद PGI. कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर कलेक्ट डेटा फॉर गवर्नमेंट पब्लिशर्स, व्हिच इज द प्रॉब्लम. ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स कलेक्ट डेटा फॉर गवर्नमेंट्स टू पब्लिश परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स. द PGI report in इतना published giving levels and compare learning outcomes. Granular data of is no use in the big country. Okay, इसके बारे में कहीं दिया हुआ था granular data. PGI data is not in sync with the current scenario of education. So यहाँ पे आंसर क्या होगा? Recent report suggests that
PGI data is not synced with the current scenario in education. लिखा है यहाँ पे कि post COVID-19 response if district level officials conduct grassroots monitoring, PGI should also bolster case in both progressing on this. Data points tracking professional outcomes can offer a wealth data on the COVID response if district level officials. तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली. तो फर्स्ट ऑप्शन अगर एलिमिनेट करते हैं या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा. ग्रैनुलर डेटा. ओके, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में अगर देखें तो इन अ लार्ज कंट्री दिस रिपोर्टिंग एप्लीकेशन ऑफ ग्रास रूट्स ग्रैनुलर डेटा टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स कैन टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ एजुकेशन. पर्पस बेस्ट व्हेन दैट लर्निंग आउटकम्स आर gleaned by from data. सो मुझे यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे PGI डेटा इज नॉट सीन विद करंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मुझे लग रहा है और थर्ड में कह रहा है डेटा इज नो यूज इन द बिग कंट्री. यहाँ पे लिखा तो है कि ग्रैनुलर डेटा टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कैन टेल अस लॉट अबाउट द स्टेट. सो थर्ड वाला जो है वो रॉन्ग है. तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा. फर्स्ट क्यों होगा, एक सेकेंड. फर्स्ट तो सही है, तो फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया, तो सेकंड थर्ड में से होगा, तो सेकंड हुआ आई थिंक. डाटा इज नॉट सिंक विद द करंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन. अकॉर्डिंग पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग PGI रिपोर्ट्स कैन बी इंप्रूव्ड. कौन से ऐसे वेज हैं जिससे इंप्रूव किया सकता है. द डाटा मस्ट बी फेच्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर सर्वेज. ओके, किन तरीकों से चेंज कर सकता है. डाटा मस्ट बी फेच्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स ऑफ सर्वे. रिपोर्ट शुड बी बोल्स्टर्ड बाय केस स्टडीज फ्रॉम बोथ प्रोग्रेसिंग एंड रिग्रेसिंग डिस्ट्रिक्ट्स. Progress in backsliding or event. District level officials should try to conduct honest and detailed monitoring of the report. So grassroots monitoring वाला एक ऑप्शन है, ठीक है. District level professional outcome wealth of post COVID. Grassroots level monitoring, bridging the gap and striking outcomes. Data must be fetched from previous years of survey. ठीक है, थर्ड होना चाहिए. ऑनेस्ट और इसकी बातें यहाँ नहीं की गई है, तो मुझे लग रहा है यही सही होगा. नेक्स्ट है कि लिखा है बट डेटा सर्व्स इट्स पर्पस बेस्ट व्हेन इट इज contemporaneous. Whatever it is, I don't know इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे. Contemporaneous artifice dilute credence when it's but data serves its purpose best when it's critical. But the latest PGI learning outcome gleaned from इतना डेटा. क्रेडेंस होना चाहिए आई थिंक. ठीक है, मेरे को क्रेडेंस लग रहा है. बॉल्स्टर्ड का अपोजिट डिप्रेविटी, क्रेस्ट फॉलन. ठीक है, डेसिस्ट should be bolstered by case deposition, undermine desist, crest fallen. Depravity, मुझे crest fallen यहाँ पे आंसर लग रहा है. बाकी देखते हैं. ऑफ द हुक, किसी मुसीबत से बाहर निकलना, राइट. सो आई वुड हेट टू सी हिम गेट ऑफ द हुक ऑन क्रिमिनल चार्जेस. पहला सही लग रहा है. वी कैन नॉट लेट हिम bandwidth companies ऑफ द हुक फॉर सपोर्टिंग ब्रॉडबैंड डिप्लॉयमेंट. We cannot let high bandwidth companies for supporting bandwidth. Her hypothesis is really off the hook, but facts seem to be supported. फर्स्ट और थर्ड मुझे लग रहा है ऑफ द हुक मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकलना, राइट. तो हर हाइपोथेसिस रियली ऑफ द हुक. और सेकंड में ऑफ द हुक यानी आई कैन नॉट लेट हिम bandwidth companies ऑफ द हुक फॉर सपोर्टिंग. सेकंड मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा, तो थर्ड और फर्स्ट. Deck out. Oliver decided to deck out her lavish dough. Over the years, they traveled enough to deck out to motorhome engine. Deck out to motorhome engines. Lavish abode with two extravagant Christmas tree. Lavish abode. यहाँ पे क्या लिखा है? Then more hope to eliminate the militia in case a rebellion did deck out. फर्स्ट और थर्ड मुझे सेम लग रहा है, बट इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सो आई थिंक इसको छोड़ देना चाहिए. टू क्रैम्प अप दिस सेंट्रल हीटिंग, टिपिकली क्रैम्प अप प्रोडक्शन, टू क्रैम्प अप debris. A second safety car period was needed to cramp up debris from the incident. When profit or refiners rise, the companies typically cramp up production, lifting demand for crude.
It is all too easy to cramp up the central heating to escape the cold. ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट और थर्ड लग रहा है यहाँ पे, और तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरे को गलत लग रहा है और मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ स्किप। मैंने 27 किए हैं, अब बाकी क्वेश्चंस मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये पैसेज वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग पैसेज ऑफ द फॉलोइंग अ कंडीशन ऑफ 1973 सुप्रीम कोर्ट। चलो इसमें हम कोशिश करते हैं कि कीवर्ड से कर लें। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट अबॉर्शन कैन बी criminalized if it is unwilling for the anti-abortion. Criminalized कब होगा? Could criminalize Roe declare that at juncture state could criminalize abortion unless necessary to save the health or life of the pregnant person. If it is necessary to save life or health or life of pregnant person, and यही मुझे सही लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। कहाँ है, यहाँ पे देखते हैं। सेव लाइफ इन 19 डिसीजन प्लान सेंट्रल होल्डिंग, हाउएवर इट आल्सो गिव्स दैट 23 से 24, ऐसा कुछ यहाँ पे तो दिया नहीं है। अच्छा, लिखा है यहाँ पे कि इफ इट इज वायलेट्स फेटल वायबिलिटी 23 to 24 वीक्स, तो सेकेंड और फर्स्ट दो ऑप्शन में मुझे मिल चुके हैं, और यहाँ पे ऑल ऑफ देम है नहीं, तो ये टिक कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज अबॉर्शन लॉ वनरेबल फॉर द फर्स्ट टाइम 1992, decision panel court affirmed the central holding for Roe. However, it gives state freedom, state greater freedom to enact fetal friendly measure. ठीक है, so is long to did not impose undue burden on the absorption right. Made, which of the following is the made? Although absorption यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी एबॉर्शन एक्टिविस्ट हैव सक्सेसफुली पुश्ड फॉर एन एवर ग्रेटर एरिया ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लॉ, ठीक है, एंड विल ग्रेटली लिमिटेड टू एक्सेस एबॉर्शन एक्सेस। सुप्रीम कोर्ट हैविंग एंटी एबॉर्शन सुपर मेजॉरिटी, यस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज एन एंटी सुपर मेजॉरिटी, एंटी एबॉर्शन पुशिंग फॉर द टफर लॉ। तो बी और सी तो होंगे, सेकेंड थर्ड तो होगा ही, ऑल ऑफ द अबव दिया नहीं तो यही होगा। Although abortion has remained an constitutional protected right, constitutional protection of abortion law, Supreme Court having anti-abortion super majority और anti-abortion active pushing for the tougher, यहाँ पे लिखा है कि anti-activists successfully pushed for an ever greater area of restrictive law which has greatly limited abortion access. Tougher laws third तो होगा ही, और सुप्रीम कोर्ट हैविंग एंटी एबॉर्शन सुपर मेजॉरिटी, एंटी एब्जॉर्प्शन although abortion remain a constitutionally protected right until now. 1992 अभी तक था बट अब नहीं है, ठीक है, तो पहला वाला नहीं होगा। अकॉर्डिंग पैसेज ऑफ द फॉलोइंग अग्रीड बाय द कोर्ट ऑन 24th of June, so 24th of June यहाँ पे इस पैराग्राफ में, while Roe and Kaise, सो यहाँ पे क्या बताना है, जजमेंट से सबऑर्डिनेटेड, रो एंड कैसी जजमेंट के ऊपर बात की गई है, कॉन्सेप्शन डेस्टिनीज नंबर्स, सो ये वाला आंसर होना चाहिए डेस्टिनीज। ह्यूमंस क्लियरली डिफाइन द सबऑर्डिनेट द राइट्स ऑफ reproductive destinies, women to control the reproductive destinies, and free and equal member of the society, ठीक है। तो सेकंड थर्ड यहाँ पे हो रहा है और बाकी तो सारे ऑप्शन है नहीं, तो ये आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज द फॉलोइंग विल इम्पैक्ट ऑन द रिवर्सल ऑफ रो जजमेंट, स्टेट्स कैन लीगली नाउ फोर्स वुमेन टू कैरी देयर प्रेगनेंसीज अंटिल टू टर्म, तो थर्ड वाला यहाँ पे सही है, और देखते हैं और कौन सा होगा। टर्म कौन से, इंटरेस्ट इन इंटीग्रिटी फॉर द मार्जिन गाइडलाइंस इन द डिसीजन, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन तो मिल चुका है, तो देखते हैं ऑप्शन से, तो अगर थर्ड होगा तो काफी सारे ऑप्शन है और चेक करना पड़ेगा। ट्रबल बाय द फैक्ट दैट reversal over states are now free, states can enact fetal friendly, free to force women to carry out, ये वाला तो ठीक है, and their pregnancy, recognizing the women's interest in bodily integrity to form margins of the decision,
transform the freely undertaken foreclose to the nature nightmare. States can enact federal friendly measures until it not burden right to the abortion. तो मुझे यहाँ पे थर्ड वाला सही लग रहा है, और बाकी तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई होगा गाइडलाइंस एंड स्टेट्स कैन फ्रेम न्यू सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, तो मुझे यहाँ पे थर्ड सही लग रहा है. बाकी मैंने यहाँ पे काफी टाइम इंग्लिश में किया है. वेस्ट अनरिलेंटिंग मतलब होता है जो चीज लगातार हो, ठीक है. रिलेंटलेस होता है, एक सेकेंड, हाँ अनरिलेंटलेस, तो रिलेंटिंग मतलब जो लगातार हो, अनरिलेंटिंग नेचर तो जो अब लगातार नहीं हो रहा, मतलब कोई चीज जिसमें रुकावटें आ रही हैं, ठीक है. प्रोसीड कपल विद द फैक्ट, सो अनफैगर, अनरेमिट, अनवील्डली, अनवारंटेड, रेमिटिंग, अनरेमिटिंग और अनरेमिटिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है. बाकी एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करती हूँ, गलत हो जाएगा. बाकी मैं सबमिट करती हूँ. 1 आवर बचा है, उसमें रीजनिंग और पॉइंट करेंगे, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ओके बाय.